Hello everyone, today I am going to discuss with you relation between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Okay, so let's start. So let a cubic polynomial px equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are real numbers and a is not equal to 0. Okay, and since it is a cubic polynomial, then it will have three zeros, and alpha, beta and gamma be the zeros of the polynomial. अभी इनके बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करनी है. सो नाउ लेट्स डू द रिलेशनशिप. सो सम ऑफ zeros इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ zeros इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x cube. Okay, so sum of zeros can be written as alpha plus beta plus gamma equals to minus coefficient of x square is b, so minus b upon a. This is our first relationship between zeros and coefficients. Okay, so now second relationship, the sum of product of zeros taken two at a time, then this is equals to coefficient of, ये किसके इक्वल होता है, coefficient of x upon coefficient of x cube. Clear? So we can write now alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to c upon a. This is the second relationship between zeros and coefficient. And third and last relationship is product of zeros. क्या होती है? Product of zeros. Product of zeros. So product of zeros equals to होता है minus constant term upon coefficient of x cube. And product of zeros, that means alpha into beta into gamma equals to minus d upon a. So hence these are the relationship between zeros and coefficient of a cubic polynomial. Now let's understand with an example. So here is example. Verify that 3 minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, so we have given px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Okay, so first of all, अब अगर ये 3 minus 1 upon 3 अगर p of x यानी कि cubic polynomial p, यानी कि when we substitute x equals to 3 in this polynomial, then the result should be 0. अगर result हमारा 0 आ रहा है x की वैल्यू 3 के लिए, -1 के लिए, -1 3 के लिए, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, zeros होंगे polynomial के. So we write for p of 3 first equals to 3, then 3 cube minus 5 into 3 square minus 11 into 3 minus 3. So we can write 3 and 3 cube equals to 27 minus 5 into 9 minus 33 minus 3. So we can write here 81 minus 45 minus 33 minus 3. So we can write 81 minus 3 minus 45 plus 33. So we get here 78
5 plus 3 8 and 78. Then we get here 0. So it means that P of 3 equals to 0. So it means that 3 is the 0 of given polynomial. ओके अभी हम -1 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो P of -1 इक्वल्स टू 3 -1 क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 into -1 -3. So we get here 3 into -1 -5 into 1 plus 11 -3. So we can write this -3 -5 plus 11 -3. Now when we add the negative numbers, so -3 -5 -8 and -8 and -3 we get -11. So -11 plus 11, then we get 0. So hence -1 is also the 0 of given polynomial. Then now we left P of -1/3 equal to, okay, P of -1/3 equals to, so 3 into -1/3 cube minus 5 -1/3 whole square minus 11 into -1/3 minus 3. So now we open the bracket, so we get -3 -1/27 minus 5 into 1/9 and then plus 11/3 minus 3. So we can cancel this, 3 1 times 3 and 3 9 times. So we get here -1/9 minus 5/9 plus 11/3 and minus 3. So now we take LCM, and LCM will be LCM of 9, 3 and 1 is 9. So we get here -1 -5 3 times 9 यानी 3 into 11 plus 33 minus 1 9 times 9 and 9 into 3 27. So when we add negative numbers, so we get 27 minus 1, it becomes -28, and -28 plus 5 we get -33 plus 33 equals to 0/9, so equals to 0. So therefore -1/3 is also the 0 of cubic polynomial. So we can say that 3, -1 and -1/3 are the zeros of P of x. ओके, सो नाउ इट इज़ क्लियर. अभी ये समझ में आ गया ना. अभी हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. सो मैं इसे रफ कर देता हूँ, देन आगे सॉल्व करता हूँ. सो अभी हमने बता दिया है कि 3 -1 एंड -1/3 zeros हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के. सो वी कैन से दैट लेट alpha equals to 3, beta equals to -1 and gamma equals to -1/3. So our first work is, so first relationship होगी बेटा sum of zeros. So sum of zeros means alpha plus beta plus gamma, which means alpha is 3 plus -1 plus -1/3. We open the brackets, we get 3 -1 -1/3. So 3 minus 1 is 2 minus 1/3. So 3 2 times 6 minus 1/3. So we get here 5/3. हमें यहाँ पे क्या मिल गया बेटा? 5/3. अभी हमें इसको मैच करना है इस गिवन पॉलिनोमियल से. ये जो पॉलिनोमियल है, तो देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, यानी कि हमारा अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला -b/a. तो b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -1. सो वी कैन राइट -5 एज अ -5/3. सो नाउ वी कैन राइट माइनस इंटू कोफिशिएंट of x square upon, and 3 is the coefficient of x cube.
coefficient of x cube. सो क्लियर हुआ? नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. सो नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ zeros taken 2 at a time. It means that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. So now we substitute the value of alpha. So what is alpha here? Alpha is 3. And what is beta? So beta is -1 plus beta is -1 into what is the value of gamma? Then gamma is -1 upon 3 plus gamma is -1 upon 3 and alpha is 3. So we open the bracket, so we can write here -3 plus minus minus plus, so plus 1 upon 3. Okay, and this 3 can be cancelled, so -1. So -3 and -1 becomes -4 plus 1 upon 3. By taking LCM we solve this, so LCM is 3, so 1 3 is 3 times and 3 into -4 we get -12 plus 3 is divided by 3, then we get quotient as a 1. हमें quotient क्या मिल गया? 1 मिल गया. Then 1 into 1 1, it means that we get here -11 upon 3. Now look what we are getting, -11 upon 3, और हमारा क्या होता है फॉर्मूला? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है C अपॉन A. एंड व्हाट इज C हियर? C इज कोएफिशिएंट ऑफ x. सो वी आर गेटिंग हियर कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x cube. So hence this is also verified. So now last is product of zeros. So last is product of zeros. So product of zeros, that means alpha into beta into gamma. So alpha is 3, beta is -1 and gamma is -1 upon 3. Okay, when we multiply then we get -1 -2. When two negative numbers multiply then we get positive number. So we write here 3 upon 3. We are not going to cancel it. हम इसे कैंसिल नहीं करना. अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमें डिज़ायर्ड हम रिलेशनशिप प्रूफ नहीं कर पाएंगे. फिर हमें उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. सो नाउ 3 upon 3. Okay, we get here 3 upon 3 and as we know that क्या होती है रिलेशनशिप अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू होता है -d अपॉन a एंड -d मीन्स कांस्टेंट टर्म विच इज़ -3. सो -3 कैन बी रिटन देन 3 कैन बी रिटन एज -3 अपॉन 3. सो नाउ वी कैन राइट माइनस constant term upon coefficient of x cube. Clear? So now hence verified. So आज के वीडियो में बस इतना ही. So thank you everyone and stay tuned.